हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। एक बहुत अच्छी अपडेट है दोस्तों। लगातार एक के बाद अब एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो डियरनेस अलाउंसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट्स बढ़ा रही हैं। साथ ही साथ पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी डियरनेस अलाउंसेस जल्द बढ़ जाएगा। तो देखिएगा, सिक्किम पहला स्टेट रहा जो कि अक्टूबर 2024 में डियरनेस अलाउंसेस बढ़ाया। अब इसके बाद मिजोरम गवर्नमेंट सामने आ गई है और 4% महंगाई भत्ता अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बढ़ा दी है। इसकी घोषणा, इसका जो अनाउंसमेंट है, कल चीफ मिनिस्टर लाल दुहोमा ने किया, जो कि मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसके साथ ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ मिज़ोरम हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ गया है। इन्होंने इसे क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे रेफर किया है और 1 महीना पहले नवंबर से इफेक्टिव हो जाएगा। So friends, now in English, so the Mizoram government has increased 4% dinners allowances for their government employees. So this is really big update for all government employees nationwide and for various state government employees, because the state governments has now increasing or have started giving 4% dinners allowances and as per the inflation rates. So there is a huge chance that government employees of Madhya Pradesh and as well as other states may be benefited soon, because after Sikkim government during or in mealwork time of or prayer time of Diwali or Dasahara, the state governments are planning to increase national allowances fastly. So if any further updates comes, I will get to know. Thank you.